Today in business studies class we will study chapter 3, that is your private, public and global enterprises. Dear students, in this chapter we will start with the introduction and in detail we will study about private sector and public sector, various types of public sector, what is the changing role of public sector, what do you mean by global or multinational companies. You must have heard about MNCs, so that they are multinational companies, joint venture and public private partnership. These are the contents which have to be covered in this chapter. Now let us start with the meaning of private sector. What do you mean by private sector? Private sector, generally in an economy, especially in India, we have mixed sector. In this we have public sector units also and private sector units also. Okay, public sector units are those firms which are owned and controlled by government. Their 51% or more share and capital is invested by whom? By government. The ownership and control of functioning management is in the hands of government. जैसा कि इनका नाम बता रहा है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मीन्स कि दे आर ओन्ड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट and they work not for profit margins, they work for public welfare. Okay, but on the other hand we also have private firms. Now what are the private firms? Private firms or the private sector firms are those firms like your sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business. They are owned and managed by private people, correct? They are owned and managed by private individuals or institutions or group of people. Their main motive is profit earning and not public welfare. So this is the difference between public sector and private sector. Ownership and motive क्या है उनका? Both are doing economic activity, both are doing production, but private sector is doing production to earn profits and public sector is undertaking production of goods and services to satisfy more and more public wants, and they are working for public welfare, not for profit motive. Other thing is ownership. Ownership is in the hands of private individuals or group of private individuals in your private sector, like partnership है, sole proprietorship है, joint Hindu family business है, etc. But public sector units are owned and managed by government. Maximum 51%, yeah, you should say minimum 51% of share capital or capital is invested by whom? By government only. Okay, so ownership is in the hands of government by owning and contributing 51% of capital in these firms. That is the thing. Let us study both the private and public. Now in this chart we observe that Indian economy is divided into two parts, private sector and public sector. Public sector units are of three types. The types of public sector units are of three types: departmental undertaking, statutory corporation and government undertakings. Whereas private sector includes या comprises sole proprietorship, जहाँ पे single owner होता है. Previous chapter में we have studied partnership, two or more persons are involved, and they have agreed to share profits and losses of the business carried by all or any one of them acting for all. That was partnership business. Then joint Hindu company. Joint Hindu company में there is a family business and they do it on an ancestral property. The head of the family is the karta and rest other members are co-partners, and it depends upon where the business is going on. There is two types of joint Hindu family business, Mitakshara and your Daya Bhaga. In Daya Bhaga, D for Daya and D for daughters. So female members can also participate in the management of the business. That's the thing. And Mitakshara, M for Mitakshara, M for males. So only male members can participate in that business. These were the two classifications of your joint Hindu company. Cooperative society, you all know. They group of people join hands in order to stop or control the effects of increasing prices over the members of the cooperative. That's the thing. Company में they arrange the share capital. They arrange the capital by issuing shares to the public. That's the thing. Next is multinational
companies, this we will study in detail in this chapter. This we haven't studied in previous chapter. We have covered till where? We have covered till company. Now we will cover MNCs, we will cover departmental undertakings, statutory corporation and government undertakings in this chapter in detail with their meaning, merits, demerits, everything. Public sector enterprises. Public sector enterprises are those enterprises which are owned, controlled and managed by government. Generally 51 or more capital is owned by whom? By government. First thing. Second thing is कि their main motive of public sector enterprise is what? Their main motive of public sector enterprise is welfare of public, to satisfy more and more public wants at nominal prices. They do not undertake on work on the principle of profit making. This definition we have already discussed. Now let us see what here it has been said. Public sector enterprise or enterprises are one which is owned, managed and controlled by the government. अच्छा, गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट और लोकल बॉडी यानी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो आपका, लाइक दैट, कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो. दे आर ऑल्सो नोन एज पब्लिक अंडरटेकिंग्स. क्या नाम होता है इनका? पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस. द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. कितने तरह की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं वो हमने अभी बताया. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज. दीज आर द फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. हम पहले भी बात कर चुके हैं. ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. अब वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है. ओके, सिंगल हैंड हो सकती है या जॉइंटली भी हो सकती है. दैट इज़ अ थिंग कि स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके, सेंट्रल दोनों मिलके उसको ओनरशिप लेके बैठी हो, या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ओनरशिप हो. तो अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ओनरशिप है तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है. अगर मिक्स्ड है तो फिर जॉइंटली दे आर ओनिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी या पर्टिकुलर फर्म. कंट्रोल ओनरशिप जिसके पास होती है, जनरली कंट्रोल भी उसी के पास होता है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है. फाइनेंसिंग, जाहिर सी बात है जिसके पास ओनरशिप है, कंट्रोल है, फाइनेंस भी वही कर रहा होता है. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स. ओके, नेक्स्ट. अब इनका पर्पस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है. सोसाइटी वेलफेयर के लिए ये फर्म जो है अंडरटेक स्टैंड इस्टेब्लिश करी जाती हैं बाय गवर्नमेंट. इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है. लाइक स्टील है आपका, ऑयल है. तो और इनका जो अदर पर्पस होता है वो होता है दे प्रोमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि मैं प्राइवेट फर्म में हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ तो मैं वहाँ खोलूँगी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एक्सेस हो. तो मैं गांव में जाके हॉस्पिटल क्यों खोलूँगी, या मैं गांव में जाके स्कूल क्यों खोलूँगी? दैट इज़ द थिंग. तो गवर्नमेंट इंश्योर्स की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, ये हर जगह डेवलप हो. पावर सेक्टर है, ये हर जगह डेवलप हो और सबको वी इंश्योर की बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो ऑल ओवर द कंट्री. क्योंकि प्राइवेट के हैंड्स में छोड़ दिया जाएगा तो प्राइवेट सिर्फ वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा पर बायर्स, अच्छे रिच क्रीम बायर्स मिलेंगे. ठीक है, दैट्स द थिंग. There are three forms of public enterprises. I told you earlier also. What are those? Departmental undertaking, public corporation and government company. Departmental undertakings actually. So there is a public enterprise which is organized, controlled and managed by the government. जैसे कि उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट चल रहा हो. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रेलवेज़. ओके, एक डिपार्टमेंट चल रहा है. अभी तक हमारे एक अदर एग्जांपल था पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑल्सो, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑल्सो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑल्सो, जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज चल रही हैं वो भी. तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट ओन्ड है, बट उसकी पूरी फंक्शनिंग अलग से हो रही है, रेवेन्यूज़ अलग से आ रहे हैं. जैसे रेलवेज़ है आपका, उनका बजट अलग से आता है, उनके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स अलग से बजट बनते हैं उनके. तो ये चीज़ें दे आर वर्किंग under government ownership and control, but they are functioning separately as a complete different department of the government.